हाय मैं सेल्फ एम R.BHUSHAN। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जो बच्चे जो 2002 से मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी को। सो मेनी स्टूडेंट्स बिकम IAS IPS एंड AIFS, उनको भी मेरा सत सत नमन। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे भी हो अच्छे कर्म करना है, सच्चाई, सचरित्रता, ईमानदारी, चरित्र और ज्ञान को बढ़ाना है। Good evening, Honourable Prime Minister ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. आज जो मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, it has been taken from the Hindu newspaper and feast of God. Harvest in the plenty, women prepare traditional cakes for a ritual in the honor of pagan god Yurya, who is believed to protect their harvest. Locals use the day to pray for a harvest in the village of Pogost, Belarus. Belarus की राजधानी मिन्सुक है. It's a beautiful city, beautiful. So the most important fact of today's are stress buster serotonin may help treat neurological decline. In surprising discovery, researchers at the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Mumbai, have found a novel functions for the serotonin, a chemical that signals between neurons. The recent discovery establishes the serotonin is involved in the generation of the new mitochondria, the powerhouse of the cell. 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 In neurons, increase cellular aspiration and fuel ATP in the cell. Serotonin's newly identified function has been studied in mice and rats. If found to be true in human, which is likely to be the case, it may have important medical implications. We cultured the neurons and looked at the effects after adding serotonin and found really unexpected results. We knew we had stumbled on something very interesting. These finds were confirmed and validated through extensive experiments. The next most important fact is 1 million species at risk of extinction. UN. 1 million species at risk of extinction. UN. Industrial farming, fishing are factors that threaten to end existence of many species. Relentless pursuit of economic growth, twinned with the impact of climate change, had put an unprecedented 1 million species at risk of extinction, scientists said on Monday, in a landmark report on the damage done by modern civilization to the natural world. Only a wide-ranging transformation of the global economic and financial system could pull ecosystems that are vital to the future of human communities worldwide back from the brink of collapse. Concluded the report, which was endorsed by 130 countries, including the US, Russia, and China. Extinctions, Questions of Survival, 1,1800-page global assessment report compiled by UN agency from more than 1,500 academic papers says that the world's life support system are in trouble. Here are the report key findings. Number 1 is extinction. 1 million species face the risk of the extinction, many within decades. 5 lakh plants and animals currently have insufficient habitat for long-term survival. 40% of the amphibian species are threatened with extinction, along with 33% of the reforming of corals and 33% of the marine mammals. Loss of pollinators caused by intensive farming is putting. Second is consumption. 1/3 of all land is used to make food. Food cultivation uses 75% of all the fresh water on the earth. 25% of man-made emissions come from agriculture, the vast majority of them from the meat production. 50% of all the agricultural land is taken from forest. 93% of the marine fish stocks are either overfished or fished to limit the sustainability. Pollution. Humans dump 400 million tons of the heavy metal, toxic sludge and other waste into the ocean and rivers each year. 75% of land, 40% of ocean, 50% of the river manifest severe impacts of the degradation from human activity.
plastic production has increased tenfold since 1990. Pollution from fertilizers has led to the formation of 400 low oxygen dead zones in the coastal water covering more than 2,45,000 square kilometers. Climate. 5% of Earth's species are at risk of extinction if the temperature rises just 2 centigrade till within the targets of the Paris climate deal. Business as usual is predicted to warm Earth 4.3 Celsius by 2100. For that to happen, 1/6 of all species could be wiped out. तो मेरे दोस्तों, आप ये न्यूज पढ़कर और सुनकर आप चकित तो हो गए होंगे कि किस कदर हम लोग इस पूरे पृथ्वी को बर्बाद करने में लग गए हैं. Scientists carry out genetic study on the people of Lakshadweep Island. Lakshadweep is an archipelago of 36 islands scattered over the approximately 78,000 square kilometers of the Arabian Sea, 200 to 440 kilometers of the southwestern coast of India, with a population of approximately 65,000. However, the genetic composition of the first human settlement of the earth is not clear. The islands were known to sailors since ancient times, and historical documents say that the spread of Buddhism to these islands happened during 6th century BC, and Islam was spread by 661 AD by Arabians. Cholas ruled the island in 11th century, Portuguese in 16th century, Ali Raja 17th century, Tipu Sultan 18th century, before the British Raj of 19th century. Genetic studies done on the people of the archipelagos by a team led by K. Thangraj in CSIR Center of the Cellular and Molecular Biology for the first time have shown that a majority of human ancestry in Lakshadweep is largely derived from the South Asia, with minor influence from the East and West Eurasia. There was no evidence of early human migration through the Lakshadweep island. The next most important news is स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी लॉन्च. स्कॉर्पियन क्लास की चौथी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी वेला का सोमवार को मुंबई में जलावतरण किया गया. कुछ महीनों के ट्रायल के बाद इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा. इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी करीब 1.5 साल पहले नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है. इस उन्नत पनडुब्बियों से समुद्र में भारतीय सेना की ताकत में बढ़ेगी. वहीं राजपूत श्रेणी की मिसाइल विध्वंसक INS रंजीत को सोमवार को नौसेना के बेड़े से हटा दिया गया. विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में इस मौके पर आयोजित समारोह में नौसेना के अधिकारी और रंजीत का हिस्सा रहे नाविकों के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल थे. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज अंतरिक्ष में स्थापित होगी भारत की दूसरी आंख. अंतरिक्ष में स्थापित होगी भारत की दूसरी आंख. सरहद पार से अब परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा. 1 मीटर के दायरे में चीज़ों को होगी स्पष्ट पहचान. पाकिस्तान के बालाकोट में 6 आतंकी शिविरों में से 5 पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने अचूक निशाना लगाया. सिर्फ एक लक्ष्य पर निशाना सटीक नहीं बैठा. अब ऐसा नहीं होगा. आगामी 22 मई को भारत अंतरिक्ष में अपनी दूसरी आंख स्थापित करने जा रहा है. इस रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसेट 2BR1 द्वारा किसी भी मौसम में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर 2 वस्तुओं की सटीक पहचान की जा सकेगी. इस श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सैटेलाइट के इनपुट से ही भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और जैसे मोहम्मद के कैंपों को तबाह किया था. खूबियों से लैस है ये भाई साहब, खूबियों से लैस है. इस श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सैटेलाइट से यह काफ़ी उन्नत है. इसकी इमेजिंग और सर्विलांस क्षमता काफ़ी अधिक है. इसका एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार रात दिन किसी भी मौसम में काम करेगा. बादलों के बीच में लक्ष्य के पहचान की क्षमता है. धरती पर 1 मीटर के दायरे में चीज़ों की स्पष्ट पहचान में समझ सक्षम है. एक दिन में धरती पर मौजूद किसी वस्तु की या 2 या 3 बार तस्वीर ले सकेगा. इसलिए गुलाम कश्मीर में आतंकी कैंपों और सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने में से ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है. भारतीय सीमाओं को हर ओर से सुरक्षित रखने का इसका अहम योगदान होगा. जिस तरह से चीन हिंद महासागर में भारत की घेरेबंदी कर रहा है, उससे उसके युद्धपोतों पर नजर रखने में इस सैटेलाइट की बड़ी भूमिका होगी. अरब सागर में पाकिस्तानी पोतों पर भी इसकी टकटकी होगी. आपदा प्रबंधन में भी इसका प्रभावी उपयोगिता साबित होगा. 26/11 के बाद महसूस हुई जरूरत.
मुंबई में 26 नवंबर हुए आतंकवादी हमले में रीसेट 2 कार्यक्रम की वरीयता दी गई। वजह यह थी कि इसमें इजराइल निर्मित ज़्यादा उन्नत रडार प्रणाली लगी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि के लिए इसे 20 अप्रैल 2009 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। धरती से 536 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सैटेलाइट रात दिन भारतीय सीमाओं की निगहबानी कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई प्रोग्राम. My best wishes to all of you. Work hard, not only get the job, work hard to glorify humanity and to glorify India. Thank you so much. God bless. God bless India.